All right. Good morning, guys. And quickly starting this because I think we are already late by 9 minutes. So कल हमने नमपाई का part 1 देखा. Okay. Yesterday, so there will be around 4 to 5 parts of this numpy, based on how fast we go, how slow we go. So anyone, any question? No. Okay. Again, where were we? So NumPy में हमने देखा. Yesterday we saw NumPy is nothing but a numerical Python, right? NumPy is nothing but a numerical Python, and it's a library which is base library in the Python, which basically deals with what? Numbers. So mostly you will be dealing with numbers when you try to learn NumPy. Okay. Second thing that we have seen is uh, we can do numerous mathematical operations in NumPy. Okay, numerous mathematical operations like probability, logarithmic math, statistics, linear algebra, geometry, trigonometry, matrix, and even generation of random number. Okay, so today we will learn this, how we can generate random numbers in using NumPy. Okay, we have seen one more thing. What is that? It is a uh, NumPy is faster than list. Okay, we have seen one more thing, that is NumPy is faster than list. And why it is faster? Because NumPy array are the collection of homogeneous data. Okay, homogeneous means same type of data types can be stored in the array, and since the same type of data types are there, the operation speed increases, right? वो assertion हो गया या फिर उसमें से removal of the elements हो गया, that becomes easier. Okay, when we deal with arrays, and a list is a collection of heterogeneous data type. It means it can have different data types in it. Okay, we have also seen how to import NumPy. Like import NumPy as NP is something typically everyone does. Okay, then we have seen one more thing, that is converting any list into an array. Converting any list into an array. So here is a list. So we wanted to convert this list into an array. So what we will do, we will say np, that is numpy dot array, np dot array, and we say list1, this one. Okay, so that gets converted into what? An array. And you can see, since there was a float was there, everything got changed into a float. Even though these were integers, these now are floats. Okay, then if we have string, everything will get changed into string. If we have complex number, everything will get changed into complex number. If you have float, everything will get changed into a float. And integer is something which is last. So this is the flow for it. If you have at least one string, then everything will get changed into string. If you have at least one complex number and not string, everything will get changed into a complex number. If you have at least one float and not complex and string, everything will get changed into an integer. Okay, उसके बाद we have seen d type. Okay, d type, what is d type? It is assigning a single data type to an entire array. ठीक है, meaning if so this is your array, you said np.array, and this is your list where you said data type is equal to int. Okay, so basically you want to change everything into an integer. Okay, everything into an integer. If it would have contained any complex number, would it change? No, because you cannot change any complex number into an integer. Okay, except string. So let's say now you have these floats and you have these integer numbers, right? But now you want to change everything into what? A complex number. What do you want to change? Everything into a complex number. Okay,
Then next we had some questions for you. So those were related to what? Uh, so how do we change any integer array into a float? So you guys solved this, and also someone solved using as type. Okay, so this is also right and easier. Next, we saw how to change this integers into a string. Okay, so this is also, I think, you guys solved. And one more thing, that sometimes what will happen, that you want to keep whatever the array is, okay, as is. If I if you want that, you will say data type equals to object. So basically it will keep string as string, complex as complex, and other data types as other data types. But if you don't mention this data type equal to object, it will change everything into what? String. If this string would have not been there, it would have changed everything into an complex. If this complex would have not been there, it would have changed everything into an float. Okay, like this. So if you want these data type as is, then you have to mention d type or data type equals to object. Okay, data type equals to object. Next, we have seen indexing very quickly. We have saw that if you want, so this is like, again, it is similar to what we have previously learned in the in what, can you see this marking? Can you see this marking? So I have annotated something on the screen. Has anyone saw that, or do I have to share my screen again? I think I do. Okay. So I was saying, कि अरे, so this is what? This is zeroth element. This is first element. This is second element. This is third element. Right? In negative indexing, this is minus one element. This is minus two element. Okay, like this. So whenever you say data type of minus one, you will get this complex number. Whenever you say data type or type, or not even type, if would have simply said array 3 would have been this, right? It would have give you 55, ठीक है? But 55 का data type क्या है? That is a string, ठीक है? String. And similarly for zeroth is 2, and two's type is integer, ठीक है? Two's type is integer. Then going ahead, later we have seen ndim. What is ndim? Ndim is basically which it checks the dimensions of your array. Okay, it checks the dimensions of your array. So you have this single dimension, these are double dimension, triple dimension, fourth, fifth. Okay, these type of dimensions that you have. So how do I see this is single dimension? If it has like, जब तक ये number आता नहीं, तब तक कितने braces है? So only one. This 2 के आगे कितने 2 braces है? 2 dimension. 3 के आगे कितने dimension? 3 braces, 3 dimension. 2 के आगे कितने braces है? 4, 4 dimension. 2 के आगे कितने braces है? 5, 5 dimension. So this is the simple logic you can keep. Okay. So now I've took one array जो one dimension है. But if I want to check, I will say array dot and dim. It will give me what? 1. Next, I took two dimensional array जिसके देखो 2 के आगे दो 2 braces है, right? So I have said array dot ndim. So I've got 2. Similarly for 3, and similarly for 4 and 5. One more thing we should know, that is np dot array for a number any. So it gives, if there is no braces in it, it gives a 0. Okay, it gives a 0. So this we should know. Next, we have seen one more thing, that is converting any lower dimensional array into higher dimensional array.
So you can convert any zero-dimensional array to one-dimensional, to two-dimensional, and so on. But you cannot convert any high-dimensional into low-dimensional. Okay. So we have seen this example, array equals to np dot array, और हमने यहाँ पर एक zero dimensional dimension नंबर लिख दिया, ठीक है. एंड वी हैव सेड एंड डिम, मतलब वी आर सेइंग कि इसका जो डायमेंशन है वो 3 कर दो. So what we have got this, we can see now this 2.3 is 3 dimensional, and we have also checked array.ndim, so it gave us 3, right? Similarly, message, let it be. So next we have seen this three-dimensional array. So can we change this three-dimensional into one-dimensional? The answer is no. Okay, so this three-dimensional array stayed 3 only. Okay, and again we have seen this two-dimensional array. Two-dimensional क्यों है? क्योंकि इसके आगे two braces है only. Into three-dimensional. Now you can see it is three-dimensional array. So you just have to say and d mean. Okay, and d mean uh, whatever the number you want to specify. Okay. Now going ahead, we have seen slicing very quickly. जिसके अंदर this is one array. So अगर हमें zeroth element चाहिए तो we would say array 0, we will get 2. अगर हमें -1 element चाहिए तो we will say like, अगर ये 5 चाहिए तो we will say -5. So we have seen this in what? List and string again. So if I want first element which is 3, so I will say array of 1. So I will get this 3. So now this becomes interesting when the dimension of the array increases. So now the dimension of this array is what? 2D. So if you want to access what element you wanted to access, this. So what you will say? What you will see? Say. So this is your. These are your, like, this is your zeroth item. This is your first item. For this pink list, ठीक है, ये pink list के लिए आपका ये zeroth item है. So if you want this 4, if you want this 4, you first have to get this item. So you will say num of 0. So you will get this entire piece, which is 3 4. And out of this 3 4, this is your 0th item, this is your first item, right? So if you want this 4, okay, if you want this 4, what you have to do is you have to say 1. ओके, इसके आगे ही लिखना है, ठीक है. सो मीनिंग अगर आपको 4 चाहिए तो यू विल हैव टू से नम ऑफ 0 ऑफ 1, सो इट विल गिव यू व्हाट? 4. ओके, इट विल गिव यू व्हाट? 4. then then uh 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 someone tried unlocking. I think I put this on the charge. Okay, coming back. Now we have seen one more critical example, और उसके पहले I think this is done, right? अच्छा, this is another example. इसमें we wanted the element of 5. ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए था. We wanted 5 as output. So again, very simple. What you will do? You will say, अब ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, राइट? 0th है, ये फर्स्ट है. सो इफ यू वांट दिस 5, इफ यू वांट दिस 5, आपको सबसे पहले इसको पिक करना होगा. तो व्हाट यू विल से? नंबर ऑफ 1. ओके, नंबर ऑफ 1. और उसके अंदर अच्छा, यहाँ पर 9 हमने निकाले हैं. सो दिस इज अगेन 9. 9 इज अगेन 1 पोजीशन, 5 is 0 position. So we have said 1 and 1. So we got this 9. In this fashion, you can get the outputs. When we try to access this one, this becomes like this is a 3D.
3D item, we can say 3 dimensional item. इसके आगे 3 square braces है, okay, 3 square braces. Now, when you want to get dimensions from this, when you want to get dimensions from this, how will you do it? You will say, सबसे पहले you will decide what you want to get out of it. Okay, what you want to get out of it. So I think the initial aim was to get this four from what? This four. Okay, this four. So you have to see कि ये अभी जो सबसे आउटर लिस्ट है, दिस पिंक लिस्ट, ओके, दिस पिंक लिस्ट, इसके अंदर कितने आइटम्स है? इसके अंदर 2 आइटम्स है. दिस इज 1, दिस इज 2. ओके, दिस इज 1. ब्लू लिस्ट, ओके, ब्लू लिस्ट. कैन आई नोट इट? यस. So this is, okay, now this is 0th item, this is first item. Okay, this entire, ये पूरा आपका 0th item है. From this 0th item, so you will say 0. Okay, so हम क्या कहेंगे? सबसे पहले array equals to 0. उसके बाद क्या कहेंगे हम? So we wanted this, ठीक है. So अभी ये लिस्ट आएगा, हमें सिर्फ ये लिस्ट आएगा. इसके अंदर 3 आइटम्स है. So this becomes ये 2, 3, 4, 5 becomes 0th item. This becomes first item. This becomes second item. So हमें ये लिस्ट चाहिए 2, 3, 4, 6. तो हम क्या कहेंगे? 0 एंड फिर से 0. उसके बाद what we wanted? This 4. Okay, this 4 we wanted. This 4. तो ये कितना आइटम है? दिस इज 2 इज 0, 1 एंड 2. सो हम यहाँ पर कहेंगे 2. ओके, सो द फाइनल आंसर विल बी 0, 0, 2. ओके, द फाइनल आंसर विल बी 0, 0, 2. So if you check, the final answer becomes a 0, 0, 2. यहाँ पर दिखा देता हूँ. If when you say 0, you will get this list. Which one? This one. So once you get this list, इसको इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ. And then concentrate on this. अभी इन दो टू डायमेंशनल array में, इस particularly outer array में या outer list में, there are 3 elements, 1, 2 and 3. So this is location 0, location 1, location 2. So location 0 हमें चाहिए. So we just said location 0. So हमें ये मिल गया. इस location 0 में we wanted this 4. So now forget about this. ये हो गया सॉल्व. अभी यहाँ पर फोकस करेंगे. Now when we want this 4, you will say this is 0, this is 1, this is 2. So you just have to say 2, तो आपको 4 मिल जाएगा. ठीक है. Similarly यहाँ पर भी हमने कुछ ऑपरेशन करे थे, यहाँ पर भी कुछ करे थे और यहाँ पर भी. So this was about yesterday. So I am revising this. This is new because this is new, that's why I'm revising or taking too much time to just revise. But guys, you also need to revise this. अगर आप नहीं करोगे तो then I will have to put some more time here. So is this clear? Yesterday lecture all clear, clear. सबका clear है? If everyone clear है नहीं है? Clear है नहीं है? Quickly clear है? Everyone, I need votes from everyone. Everyone clear है नहीं है? Clear है नहीं है? Only one clear नहीं है क्या guys? अगर नहीं है तो we can discuss it. Rest.
people. Hmm, okay, so let's continue with the today's lecture, जिसमें hmm, जिसमें we will see. सबसे पहले I will connect this. I will just connect this one. Okay. सो आज हम सीखेंगे numpy ही सीखेंगे एक्चुअली, बट numpy में वी विल सी, लेट्स से एक एरे में लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर, एक तो इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। हाउ डू आई इंपोर्ट numpy एज np। ओके, इंपोर्ट numpy एज np। सो मेरा एरे इंपोर्ट हो गया, देन सॉरी numpy इंपोर्ट हो गया, देन आई से np डॉट एरे। ओके, और इसके अंदर आई कैन ऐड any data type, like any list, let's say 6.8 and uh, RAM. Okay, so if I want this same d type, if I want to continue these d types, I will just have to say object. Okay, I will just have to say object. If I print this array, or if I ask this array, I will get exactly as is. Okay, exactly as is. So, can I convert this array into a data frame? So, convert this array into a data frame. Okay. So, ये interview question हो सकता है. Okay. The question can be interview question. Okay. So, आपको क्या सोचना है? So, interviewer will also say कि भाई take any array. So you just have to say like array equals to np dot array, और उसके अंदर ये array डाल देना है, ठीक है। ये complete array डाल देना है। Now he will say convert this array into a data frame, ठीक है, into a data frame. So how do we do it? So सबसे पहले we will import this. Import, one second, someone is trying to join or already join. Okay, so you will have to say import pandas as pd, ठीक है। what you have to say, import pandas as pd. so इसको समझ में नहीं आया तो भी you will understand, because going ahead we will be learning this panda data frame, ठीक है। so हम simply क्या कर रहे हैं, import pandas as pd. then what you will say, df, that is data frame. Okay, df, that is data frame, and then we will use this pd. and when I say dot, so I will get all the functions, ठीक है। I will get, so ये सारे फंक्शन हम सीखेंगे, इसमें से हम उठाएंगे दिस डेटा फ्रेम, ठीक है। क्या उठाएंगे, दिस डेटा फ्रेम, एंड उसके अंदर हम ये एरे डाल देंगे, दिस एरे, ये एरे हमने इसके अंदर डाल दिया। एंड नाउ यू विल, इफ यू सिंपली रन दिस, अरे इसके अंदर आई नीड टू आस्क दिस df, if you simply run this, it will become a nice, what, data frame. You can see this 2 3 4 6 2 3 6 4 6 8 and this RAM. So you have converted this array, this entire array into what, a data frame, a data frame. So one more thing you can add is column, okay. You can say column equals to, for example, data array data array data. You can say column number, यहाँ पर कुछ भी नाम देख सकते हो। if you now return this, तो हमें error मिल रहा है, what it says, array data. Hmm, we should have got this. columns कुछ गलत लिख दिया क्या हमने, columns equals to
Index must call the collection of some kind of array data was passed. Mm, mm. Uh, let's check. So usually you should get, अच्छा, इसको हमें एक लिस्ट में कन्वर्ट करके देना होगा. So now let's check if we get, अच्छा, inside this list. Okay, so it has a specific format, guys. It has a specific format. Now you can check. So ये छोटा सा भी mistake can become a error. ठीक है, can become a error. So you just said columns equals to array data. ठीक है, you can change anything. यहाँ पे you can say column equals to column column one. ठीक है, column one. You can also say like this. Column equals to column one. So इस column में आपका ये पूरा जो ये यहाँ पर जो आप mention करोगे array which is this one will get added. ठीक है, will get added. So now if this has some more Sham like this, if you run this, you will get Sham here as well. ठीक है, you will get Sham here as well. So the very first thing today, the very first thing we have seen is converting any array into a data frame. ठीक है, converting any array into a data frame. कैसे किया हमने? We have said array equals to np.array. So yesterday we have seen this. ठीक है, उसमें सिर्फ d टाइप हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा है. ठीक है, डी टाइप हमने ऑब्जेक्ट किया है. ऑब्जेक्ट वाई? बिकॉज वी वांट एवरीथिंग एज सेम. अगर हम डी टाइप इक्वल्स टू एरे नहीं करते तो ये सारे स्ट्रिंग में चेंज हो जाते हैं बिकॉज राम एंड श्याम आर स्ट्रिंग. नाउ हमने सिर्फ पांडास इंपोर्ट किया एज व्हाट? पीडी. एंड देन वी सेड पीडी डॉट डेटा फ्रेम. दिस इज अ फंक्शन इनसाइड डेटा पांडास. ठीक है, तो अगर ये समझ में भी नहीं आता है तो बाद में ये आपको याद हो जाएगा बिकॉज वी विल बी लर्निंग दिस so many times. We will be learning this so many times. उसके बाद उसमें आपने एक array ऐड कर दिया ये और एक column name ऐड कर दिया. Okay, and the column names are these. Column name and this is your array. Okay, got this? Got this? Have you got this? If you have got this, okay. If you have got this, type GT or yes would also work. Got this? Got this? Cool. So now you can actually like pandas में और भी कुछ functions होते हैं like you can say df dot info. अगर info कर दिया तो आपको ये सारा information मिलेगा इस data frame के related कि there are boolean none कितने हैं, none zero है इसके अंदर and ये सारा details. ये अभी तो ज़्यादा आ रहा है, पहले तो बहुत कम आ रहा था भाई. ठीक है, इसको एक function में convert कर दो. Now you will get this. So you will get इसके अंदर 6 एंट्रीज है. ठीक, these are 6 एंट्रीज. कॉलम फ्रॉम 0 to 5. ठीक है, एक ही टेबल है और एक ही कॉलम है. उसके अंदर कॉलम एक ही है और वो भी 0th पोजीशन है. उसके अंदर देयर आर नो नल वैल्यूज. नल वैल्यूज मीनिंग इसके अंदर जीरो या नल, देयर इज लाइक कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है उसके अंदर. ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं. और जो डी टाइप है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, data type is an object data type. So this will also you will be learning in the pandas. And this is how it is. So I want you to convert one data frame. So I will give you this list one. Okay, list one. उसके अंदर I am giving you this list. So first you have to change. First you have to what? Change to array, then change to data frame. ठीक है, change to array, change to data frame. So try this guys quickly. Try this quickly. So try this quickly. Simple होना चाहिए. How I have done here. तो मैं यहाँ पर एक ही example आपके लिए open रखता हूँ and you already have the questions.
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है into an array, जो हमने कल सीखा था ऑलरेडी, which we have learned yesterday in a very thorough manner. Someone says N पांडे, कुछ तो डिलीट कर दिया। आरुष भाई, हेलो, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, ग्रेट। आरुष भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आपको सो ज्वाइन आवर चैनल गाइस, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। एंड हम डेली आ रहे हैं लाइव सुबह 8 से 9, and we are learning this Python, data science, machine learning, deep learning, and generative AI also going ahead. So stay tuned, connect rahiye. Anyone tried in the class? Last 1 minute, guys. ठीक है? Last 1 minute or maybe 20 seconds. Right. क्या करना है सबसे पहले? You will have to change to array. उस लिस्ट को array में change करना है. Then you have to change to a data frame. ठीक है? Change to a data frame. ओके, समवन राइट। अच्छा, आंसर नहीं चाहिए एग्जैक्टली, वी नीड अ कोड। अच्छा, सो समवन हु गोकू सेड, तो इंपोर्ट कर लिया पांडास, उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पर, तो ये प्रिंट कर दिया एरे। देन ही इंपोर्टेड पांडास, देन टुक अ लिस्ट। अच्छा, लिस्ट ही नहीं, यहाँ पर एरे भी यूज कर सकते थे, बट दिस विल ऑल्सो वर्क, and convert it into this, and this is the final output that we will get. Okay, so but what we are looking for, we are looking for a code. ठीक है, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, change into an array. So कैसे करेंगे, array equals to एक वेरिएबल ले लिया मैंने, I've said np dot array, और उसके अंदर मैंने ये list one ऐड कर दी। ठीक है, list one ऐड कर दी, and if I say array, और if I print this array, so I will get this array like this. Okay, I will get this array, yeah, I should get this array. और यहाँ पर I can also mention a d type, अगर मुझे जो भी data type चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद what I will do, I will do pandas, like data frame में convert कर दूंगा, like data frame equals to pd, that is pandas, and I will say data frame of what, of array. array भी ऐड कर सकते हो आप, और what you can add extra is अरे को भी डायरेक्टली फ्रेम में चेंज कर सकते हो, या फिर लिस्ट को भी यूज कर लो, दीज आर लाइक ऑलमोस्ट सेम सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, एंड नाउ इफ आई आस्क फॉर दिस डेटा फ्रेम, आई विल गेट एरर। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये लिस्ट में चाहिए। ठीक है, एंड नाउ आई विल गेट दिस वैल्यूज लाइक 2, 34, 55 एंड 11। ठीक है, अगर ये एरे भी यूज करते हो या लिस्ट वन भी यूज करते हो, तो लाइक गोकू इज राइट। यार गोकू बोलने से है ना, वो डायरेक्टली वो एनिमे का गोकू याद आता है मुझे, तो नाइस नेम। So this is how you can get the output. ठीक है, so this is the final output, but what we were looking for, ये code। ठीक है, always try to write a code, बाकी compiler तो कर देगा। ठीक है, whenever I ask some questions। All right, looks like you got this topic, and we are moving to new topic that is called as reshape। ठीक है, reshape। ओके, reshape सीखेंगे आज। So what is reshape, guys? Yeah. The meaning or the name says कि we are giving some reshaping to the what, array, क्योंकि मोस्टली हम array ही यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, सो आई से np डॉट array, और उसके अंदर मैंने एक बड़ी ही लिस्ट ले ली।
फॉर एग्जाम्पल कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 88 कॉमा 99 कॉमा 77। ठीक है, ये काफी बड़ी लिस्ट ले ली मैंने, एंड आई एम जस्ट आस्किंग दिस array. So what I will get this array. Okay, this is an array. उसके बाद when I say array equals to और array dot this array equals to, ऐसे ले लो या डायरेक्टली ले लो, ठीक है, इसको मैं लूँ या नहीं लूँ doesn't matter. Then I say reshape. When I say reshape, what array, इसको लिया है मैंने, ठीक है. Now basically this, इसको लिया है, उसके सामने मैंने कहा array dot reshape. और when I say 1 comma for example, you can see यहाँ पर क्या टाइप कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक ऑर्डर सपोर्ट. So if I say 12 for example, and if I print this, I will get this array which has increased. This has changed to what? 2 dimension. Okay, this has changed to what? 2 dimension. Next, अभी कुछ और example. So we'll get now an array dot reshape. ठीक है, array dot reshape. Instead of this 1 comma 12, if I say 12 comma 1, what if I say 12 comma 1? You can see, हर एक एलिमेंट को एक लिस्ट मिला है. नाउ इसका अगर आप शेप चेक करोगे, सो दिस इज अगेन 2 डायमेंशनल बट शेप हैज चेंज्ड. सो हर एक को अपन प्रिंट करते जाते हैं, ठीक है, हर एक को नहीं करेंगे, इसको ही करते हैं सबसे पहले, प्रिंट एंड प्रिंट. ठीक है, ओके, इट वाज लुकिंग लाइक दिस. इसमें वन डायमेंशन, ठीक है, वन एलिमेंट, लाइक दिस इज एंटायरली वन एलिमेंट. ठीक है, दिस इज एंटायरली वन एलिमेंट, उसके अंदर 12 डिजिट करना. दिस इज लाइक गलती से 12 ही हमने ले लिया, 4 4 एंड 4. देन वी हैव सीन कि 12 एलिमेंट्स कर देना. दिस ऑल आर 12 एलिमेंट्स, उसके अंदर एक ही व्हाट यू हैव टू ऐड वन एलिमेंट. ठीक है, इस लॉजिक से इफ आई गो एंड इफ आई से डॉट रीशेप, ठीक है, रीशेप आगे जाना चाहिए. एंड नाउ इफ आई क्लिक, what it will give me, it will give me, सबसे पहले हमने क्या किया था 1, तो यहाँ पर अभी हमें 3 छोटी छोटी लिस्ट मिल गई, 2 लिस्ट 3 लिस्ट, एंड वो के अंदर 4 एलिमेंट मिल गए. रन कैसे, 1 लिस्ट 2 लिस्ट एंड 3 लिस्ट, एंड एवरी लिस्ट विल हैव 4 एलिमेंट्स. ठीक है, 4 एलिमेंट्स. अगेन यू विल गेट दिस रीशेप इक्वल्स टू सो इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम कि भाई मैं लिस्ट जो आपने दी उसके जगह 4 लिस्ट देता हूँ, हर एक के अंदर 3 एलिमेंट पास कर दो. सो यू विल गेट, यू गॉट इट, राइट, यू गॉट. सो इसका अभी आपको ये पूछता हूँ, ठीक है, सो इसका आउटपुट कैसा है आप बताओ. शेप शेप शेप, इसके अंदर इफ आई से आई वांट 2,6, सो मे बी आई विल गेट ओनली दीज 2, के अंदर 6 एलिमेंट्स आने चाहिए. ठीक है, सो गाइस फन फॉर द कमेंट. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मुझे बताओ. ठीक है, इट्स ओपन फॉर द कमेंट्स. कमेंट्स में इसका आंसर बताओ. ठीक है, आई विल ओपन दिस फॉर यू. And similarly I can see whatever I am doing in the shape of what, the array. हमारे पास 12 एलिमेंट्स थे, we had 12 एलिमेंट्स. इस 12 एलिमेंट्स को एक तो 12 into 1 हो सकता है, राइट, और 1 होता है, राइट. अगेन can 3 into 4, 4 into 3, राइट, that is 12. 2 into 6 भी हो सकता है, या 6 into 2 भी हो सकता है. What are the shape? तो 6 को 2 क्या आएगा, लिस्ट रहेगी छोटी छोटी हर एक एलिमेंट में, हर एक 6 लिस्ट एंड each list contains what, contains what, 2 elements. Okay, 6 list contains elements. ये समझ में आया क्या गाइस? I'm shaping, reshape करता है, इसको एक अलग शेप दे रहे हैं. इनिशियली हाउ वाज, इनिशियली इट वाज लाइक दिस. I don't want this. Initially it was like this. It was like this. तो हमने सब उसको ऐसे रीशेप कर दिया into 2D array. तो उसी को ऐसे रीशेप दिया, उसी को रीशेप कर, इसका हम शेप चेंज करें. Whatever the shape that it possess, trying to change that. Okay, whatever the shape that it had, we are trying to change that shape. Okay, change that shape. इसमें क्या रहेगा 2,6 में, 2,6 में क्या,
आई विल गेट टू लिस्ट, ये एक लिस्ट है और लिस्ट और इसके इस empty डाल दो, not what is okay, so got its meaning. चलो ठीक है, बढ़िया है. So let me just give you one quick example. If I just take 4 elements, ठीक है, if I just 4 elements, if I say np dot, इसको np मतलब कुछ इस तरीके से. If I want to change this into 2 by 2, okay, so I will say nums dot reshape, ठीक है, reshape. I need two lists के अंदर 2 elements. ठीक है, मैंने कहा कि मुझे 2 लिस्ट चाहिए और उसके अंदर 2 एलिमेंट चाहिए. सो इफ आई रन दिस 2 लिस्ट और उसके अंदर टू एलिमेंट्स. ओके, टू एलिमेंट्स, सिंपल था, राइट. दिस आई कैन आल्सो से लाइक दिस nums, कैन आई से लाइक शेप, कैन आई से लाइक दिस 1,3, 1,3 तो शायद नहीं होगा, 1,4 करना होगा. ठीक है, सो आई विल गेट लाइक दिस एक लिस्ट एंड 4 एलिमेंट्स. ओके, तो इसको मल्टीपल अलग अलग तरीके से आप एक साथ खेल सकते हैं. ओके, यू कैन प्ले अ. Now this reshape has one more element. This reshape has one more element. That is, it can also convert into 3 dimensional. अभी ये सारे 2 dimensional में convert कर रहे हैं, ठीक है. This is 2 dimension, 2 dimension. You can also convert into dimensional. Three examples. ठीक है, 3 examples. So what's the first example? So you can say array. मैं first वाला ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला array dot reshape, ठीक है, आगे reshape. You can say let's say 2, 2, 3, 2, and if you run this you can see. तो आपको ये दो, सबसे पहले ये लॉजिक, ठीक है, 2 लिस्ट में, right? इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स. नेक्स्ट goes to the next level. Ayush says hello Ayush. तो it takes you to the 3 level. ये आपको it gives you three dimensional array. So how, देखो इनका लॉजिक आपको लाइक माइंड में पता रहना चाहिए कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. ठीक है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग डायमेंशनल एरे. उसके अंदर आई नीड लाइक टू लिस्ट. तो ये फर्स्ट बड़ी, ये सेकंड लिस्ट होगी बड़ी, उसके अंदर आई नीड 3 छोटी छोटी लिस्ट. तो ये लिस्ट होगी 1 2 3 और ये छोटी छोटी लिस्ट में आई नीड दिस 2 एलिमेंट्स. ठीक, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस रीशेप. सो यू कैन से लाइक कि मुझे फॉर एग्जांपल 3 लिस्ट चाहिए. लिस्ट लगी 3, ये बड़ी लिस्ट में राइट, और इसका आज आएगा 3. ठीक है, उसके अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग 2 लिस्ट. मतलब यहाँ पर जो 3 आ रही थी, जो 2 ही आई, ये 2 आएगी, फिर ये 2 आएगी एंड देन ये आएगी. 3 लिस्ट. ठीक है, ये फर्स्ट 1 2 एंड 3. ठीक है, ये कॉमर्स को ध्यान देना, ठीक है, कि कहाँ पर दिस कॉमर्स आर गोइंग. यू वांट इनसाइड दिस, यू वांट टू, यहाँ पर एक लिस्ट है, ये 2 लिस्ट्स है, ये 2 लिस्ट्स है. Inside these 2 lists, you have these 2 elements 1 2 1 2 1 1. Okay, like this. So और भी तरीके से array dot reshape और उसके लिए I need 2 2 3. If you say you will get this. Okay, okay. और मतलब ये मीन इसका कैसा है, let's say 0 and then you will get column. ठीक है, like this. इस तरीके का मीनिंग रहेगा कि फर्स्ट दिस, लाइक अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो ये फर्स्ट रोज है एंड दिस इज कॉलम. ओके, बट देयर वन मोर थिंग. अगर आप कुछ मतलब आप बस बोल देते हो कि यार मुझे ना ऐसे कुछ भी दे दो, ऐसे कुछ भी दे दो, 1 2 3 दे दो, सो इट विल गिव मी एरर बिकॉज द साइज ऑफ द एरे जो हमारे एलिमेंट 12 शुड बी. देखिए तो उधर और 2 छोटी लिस्ट दे दो और उसके अंदर 3 एलिमेंट. सो 2 छोटी लिस्ट में आप 6 आइटम डाल सकते हो बिकॉज यू हैव 12 एलिमेंट्स, राइट. तो ये 6 एंड 6 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे. बट व्हेन यू से 3, तो ये 3 एंड ये 3 जाएंगे, आखिर ये बचे कहाँ पर जाएंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई राइट एरर, बिकॉज you had 12 elements in the array. ठीक है, and this is taking only 6 elements. ठीक है, ये कब चलेगा, जब आपके पास 6 एलिमेंट हो. ठीक है, this will only have 6 elements. Okay, 6 elements. So we got the one because data points have got. Okay, GTG. Okay, some GT would be accept. So now we are going to see one more thing, array to a list. Okay, converting array to a list. So अभी तक मैंने देखा, we are converting any list, ये को हम array convert करते हैं. कैसे करते हैं? np array.
एग्जाम्पल दे देते हैं। कैसे करते हैं कि ये लिस्ट 1 है, इसको हमने कह दिया 5, ठीक है, और इसको हम कैसे कर रहे थे, array इक्वल्स टू np डॉट array, और उसके अंदर हम पास कर देते थे, ठीक है। तो now वैसे we get this जैसे था इसको फिर लिस्ट टू, the very first thing is एक बहुत छोटी, और why we do it, that is also simple because sometimes want to do like लिस्ट में जो फंक्शंस है, जैसे अपेंड फंक्शन हो गया, राइट, जैसे अपेंड फंक्शन हो गया या एक्सटेंड फंक्शन हो गया, so these functions are of extend functions of lists. You want to use this function, तो ये array पे तो नहीं वर्क करेंगे, राइट, so you say list 2 equals to for example, and उसके बाद आप उसके एक सिंपल तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो, ठीक है, आप ऐसे कर लो, क्या कर लो, इसको लिस्ट ऑफ एरे कह दिया, जो ये एरे है उसको लिस्ट में ऐसे कह दिया, when you see this array which is not right, right, which is not right, तो आप और एक तरीका लाइक ये भी एक्चुअली यही है, दिस इज दिस, एंड इसके ऊपर आप अपेंड फॉर एग्जांपल 100 डाल दिया, एंड you ask for list 2, you will get 100 also, ठीक है, तो इस पे तो चल जाएगा, दिस इज एक्चुअली अ लिस्ट numpy के फंक्शंस में, one more function that is called as, let's say you say x equals to array, okay, array this array dot to list, okay. When you say x dot array dot to list, okay, to list meaning इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, इसको इस चीज को इस array को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, you are just saying array dot to list, तो it will convert it into what, a list, okay. So क्या फंक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं और एक ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे हम टू लिस्ट, ठीक है, वी आर लर्निंग टू लिस्ट, उसके अंदर कन्वर्टिंग एन एरे टू अ लिस्ट, ठीक है, सो वी यूज दिस टू लिस्ट फंक्शन, ओके, टू लिस्ट फंक्शन, ये समझ में आया, इसके अलावा कुछ है नहीं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई अगेन से array इक्वल्स टू np डॉट array array, और इसके अंदर और एक लिस्ट में ऐड कर देता हूँ, जैसे 22 33 44 55, so this is my array of now, इसको मैं लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, I will dot to list, ठीक है, if I run this I will get this array converted back to what, list, ठीक है, so we should know कि how to convert a list into an array, array into an list, okay, list to an array, array into an list, ठीक है, और इसके अंदर आप शेप भी चला सकते हो, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ही लगा दिया, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर ये वर्क करेगा, शेप, इसको शेप कर दिया फॉर एग्जांपल 2, 2, let's see whether it works, अच्छा नहीं, it doesn't work, yes, you can store this like this, अच्छा ये लिस्ट पे नहीं वर्क करेगा, ये इसे वर्क करेगा, एरे पे वर्क करेगा, दिस इज लिस्ट राइट, लिस्ट पे शेप वर्क नहीं करेगा, एरे पे ही करेगा, anyone has any questions till now, ये दो तीन चीजें सीखी, सबसे पहले what you learned, how to convert any array into a data frame, ठीक है, how to convert any array into a data frame, जिसमें हमने सबसे पहले लिया we took an array and उसको this was 6-7 elements of array, now we imported this pandas library and we said pd dot data frame, उसके अंदर हमने ये array पास कर दिया, this array, and we have also said what we have said कि कॉलम नेम, ठीक है, हमने कॉलम भी दे दिया, सो ये लिस्ट से तो आगे हम going ahead we have also seen this function tf.info, उसके अंदर डेटा फ्रेम आगे भी और ज्यादा पढ़ेंगे, सेंड उसके बाद हमने देखा कि एक लिस्ट का एग्जांपल दिया आपको, एक कैसे we use np.array to change the array into a data frame, pandas pd.dataframe, उसके अंदर array ऐड कर दिया, and then column name equals to values, ठीक है, इसके बाद reshape function, so what it gives, ये आपका सिंगल array में कन्वर्ट करता है सबसे पहले,
ओके, इट टेल्स कि कितने लिस्ट चाहिए और उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए. सो आई नीड दिस 3 लिस्ट. ओके, 1 2 3, और उसके अंदर मुझे हर एक लिस्ट के अंदर मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए. सो later you said I need 4 list. You can see 1 2 3 and 4, और हर एक के अंदर 3 एलिमेंट चाहिए. So we got this 3. Again 2 by 6 and we have also seen कि 3 dimensional array भी convert कर सकते हैं. So we said you need 2 big, ये 2 बड़ी लिस्ट में उसके अंदर और थोड़ी छोटी 3 लिस्ट चाहिए और हर एक लिस्ट में 2 एलिमेंट्स चाहिए. And similarly we have seen different elements, and this one error example also we have seen. And उसके बाद we have seen this converting any array into a list. ठीक है, अब तक हम जो भी लिस्ट थी उसको एरे में कन्वर्ट कर रहे थे. नाउ वी आर कन्वर्टिंग array into a list. ठीक है, so this was a ये यहाँ पर this was a array, like list ही हमने array कन्वर्ट करी. So this was array dot to do list टू लिस्ट मतलब we are just saying कि टू लिस्ट में लिस्ट कर दो उसको. ठीक है, have you got this guys? If you have any questions first, अगर कोई भी क्वेश्चन है, slightest question, you can add slightest of the slightest question you can add. And you've got everything if you got everything, so if you have any questions, still open. If you have any questions, if you have questions, and if you don't have any questions, and if you have understood everything, if you have no questions and if you have understood everything, type win in the comments guys. Okay, type win. Okay, okay, all right. Hmm. All right then guys, let's close today's class. Tomorrow also we will be doing this lecture on the same time, that is 8 to 9. And I have pushed the notes, the numpy के notes थे मैंने यहाँ पर push कर दिए हैं. So you can go and check, मतलब this first lecture के, अभी ये second, this is yesterday's lecture. तो यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. कहाँ पर चेक करना है? ये GitHub का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ग्रुप पे मिल जाएगा. वहाँ पर ये numpy फोल्डर है, उसके अंदर ये कल के बैच की फाइल है. ठीक है, एंड टू प्रैक्टिस यूट्यूब पे लाइव फोल्डर में आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेशन. उसको 2x पे चला दो, आपको सारा समझ में आ जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन दी tomorrow's lecture guys. Bye bye, have a good rest of the day.